हेलो मास्टर्स। यस सर, आप स्टार्ट करो। नमस्ते मास्टर्स, बैठ जाइए ध्यान में। स्पाइन को सीधा रखना है, कुशन लगा लीजिए, बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए और ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। नमस्ते मास्टर्स, एवरीबॉडी, let's sit in meditation. Put a cushion underneath, make sure your spine is straight and sit very comfortably. These evening sessions are to become one with your breath, with your body. These are meditation sessions. The focus is always on meditation, which is becoming the body, becoming the breath, harmonizing with the mind so that the mind can rest. And once we attain a state of emptiness, then we remain in that and listen to the wisdom. ये जो शाम के सेशंस हैं, ये मेनली इसमें हम ध्यान की स्थिति में आते हैं, सांसों के द्वारा, शरीर के द्वारा, एकदम सांसों में लीन हो जाते हैं, शरीर बन जाते हैं, मन को आराम देते हैं, मन शांत हो जाता है। हमारा मेन मकसद यही होता है कि शरीर की अनुभूति करें, सांसों में जाने लगे, मन एकदम शांत हो जाए। ये मेन मकसद है। फिर उस शून्यता में आने के बाद उस गहराई से कुछ विजडम सुनते हैं। कई बार ये विजडम जो सुबह का सेशन होता है उसके बारे में होगी, कई बार रिलेटेड टॉपिक पे होगी। तो सांसों में आ जाइए, सांसों को गोलों में लेना शुरू करिए। गोलों को बनाइए, पूरा ध्यान सांस के गोलों में रखिए। गैप को कोई भी गैप नहीं। जब सांस अंदर आ रही है तो मर्ज हो रही है, मिल रही है बाहर जाती हुई सांस के साथ, और जो बाहर जा रही है सांस वो अंदर आने वाली सांस के साथ मिल रही है। तो एक पूरा सर्कल बन रहा है। उस सर्कल में सांस लेते रहिए, गोले में सांस लेते रहिए, कोई ब्रेक नहीं। पूरा फोकस देना है। जब सांस अंदर आती है तो थोड़ा फोकस ज़्यादा इसलिए रहता है कि एनर्जाइज हो रहे हैं, ऊर्जा आ रही है।
और जब सांस बाहर जाती है तो एकदम रिलैक्स होते जाना है, और फिर थोड़ी ऊर्जा और फिर रिलैक्स, फिर ऊर्जा और फिर रिलैक्स, ऐसे ये गोला चलता रहेगा। So we are breathing in circles. Incoming breath merging with the outgoing breath without a gap, and outgoing breath merging with the incoming breath without any gap, one becoming the other. Just the sensation with incoming breath is energizing, so slightly more intensity there. And the sensation in outgoing breath is complete relaxation, a sense of energizing and relaxation, and energizing and relaxation. And this circle is happening. Keep doing the circle. Make the circles which feel the most natural to you. You can simply visualize a circle. The only rule is we are energizing with the in-breath and relaxing with the out-breath. We can sometimes breathe in through the root to the crown, back to the root, to the crown. This is how we start. But these circles can be made smaller when your body is ready. Let it happen on its own. From the root, you can join the second chakra, start doing it there. Then come to navel, to Manipur. Just go with your body, what your body is doing. Sometimes you're not even focusing on chakras,
We're just doing the circles as a visualization, and that is also fine. Let the body guide you. Generally, we start with bigger circles and go into smaller circles. Generally, we start with more energizing and relaxing with intensity. And slowly, the breath becomes more shallow. As the breath becomes softer, the energy increases, relaxation gets deeper, and you may not be breathing much. So just listen to your body. Let the body do the breathing. You become the witness. जब हम ये सर्कल्स में सांसों को लेते हैं तो जनरली हम रूट चक्रा से क्राउन, क्राउन से वापस रूट, एनर्जाइजिंग होते हैं रूट से स्पाइन से क्राउन, क्राउन से रिलैक्स होते हुए आगे की तरफ, एकदम रिलैक्स होते हुए वापस रूट में, और धीरे धीरे ये सर्कल्स छोटे होते जाते हैं. रूट से आप सेकंड में आ सकते हैं, सेकंड से नेवल या थर्ड चक्र, ऐसे ऐसे सर्कल्स छोटे हो जाते हैं. अपने शरीर पर पूरा भरोसा रखिए. 100% ट्रस्ट कि शरीर को पता है कैसे ये सर्कल्स अपने आप छोटे हो रहे हैं. ऐसा देखिए कि शरीर सांस ले रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, केवल विटनेसिंग बनते जा रहे हैं. शरीर सांस ले रहा है गोलों में, The whole magic of meditation is to surrender into this feeling of nothingness. The mind wants to engage,
but you are just becoming the breath, the body. So there is a feeling of nothingness, and the mind may resist because the mind wants to think, and you're going into nothingness. There's just breathing and body. And yet, in this nothingness, there are infinities. In this nothingness, if you could taste the bliss that happens sometimes, you would have tears in your eyes. You just have to trust to become this nothingness. That's the meaning of meditation, to discover the infinities in nothingness, to discover fullness in nothingness. But you're not searching, you are just becoming nothingness. Just the body, just the breath, complete surrender. ध्यान का मतलब ही ये है कि हम शून्यता में जा रहे हैं, सांसों में, शरीर में जैसे कुछ नहीं है, उसके अंदर जा रहे हैं, जहाँ शून्यता है, एक पूरे भरोसे के साथ कि इस शून्यता में अनंतता छुपी हुई है। पूरा भरोसा रखिए कि ये शून्यता अनंतता का द्वार है। मन को अच्छा नहीं लगता, ये क्या है सांसों में ले रहे हैं, मन सोचना चाहता है, मन सेंसेस में जाना चाहता है। अगर पूरा भरोसा करके सरेंडर करते जाइए, सांसों में, सांसों की शून्यता में आ जाइए, गोलों में रहिए, गोलों में रहने से धीरे धीरे मन शांत हो ही जाता है। और ध्यान का गहरा मतलब यही है कि इस शून्यता में जो अनंतता है, उसका आभास हमें होने लगा है। एक अद्भुत आंतरिक आनंद है, उसकी अनुभूति होने लगी है, बीच बीच में होने लगेगी, होती है, और उसको गहराइयों से जानने लगेंगे तो ऐसे भी अनुभव होंगे कि ऐसी अंदर की अद्भुत आनंद के आंसू आ जाएंगे। ऐसा भी अनुभव होता है, इतनी गहरी शांति और खुशी,
उसको खुशी भी नहीं बोल सकते, एक शून्यता का बहुत ही अद्भुत आनंद। जहाँ शून्यता में भरपूरता को महसूस किया, वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान। और सांसों के गोलों से ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि शून्यता में प्रवेश करते हैं, अनंतता को महसूस करते हैं, मन शांत हो जाता है। In this emptiness, emptiness of mind, there is a fullness of the soul, the fullness of the higher self, and that's the secret. Emptiness of mind, fullness of higher consciousness. And there is a sound of silence, the sound beyond sound, sound beyond senses. Sometimes you can hear that sound. ये मन की शून्यता आत्मा और पूर्णात्मा की भरपूरता है, और यही इसकी अद्भुत जो अद्भुत नेचर है ध्यान की, कि मन की शून्यता से आत्मा पूर्णात्मा की भरपूरता महसूस होने लगती है। आत्मा और पूर्णात्मा को एक शून्यता की एक मधुर
ध्वनि है, जैसे कि ओम जैसी एक अंदर की आवाज। ये आवाज महसूस हो सकती है जब हम बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी दिल से बना हुआ संगीत सुनते हैं तो वो हमें एक शून्यता का आभास कराती है। तो अभी जो मंत्र लगाएंगे इसमें आप शून्यता को महसूस करिए। This sound of silence, this sound of divinity, this has a feeling of emptiness. So now we'll play some chant in which feel the emptiness, the fullness coming from emptiness. Feel that. We'll play this for 5 minutes.
कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो सांसों में आते जाइए, शरीर में आते जाइए, संगीत जो आत्मा का संगीत है, शून्यता में उस आवाज में महसूस कर सकते हैं। अभी हम जो चलाने वाले थे संगीत, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है इंटरनेट में. So there was some issue with the internet, with the music. Just stay with the breath, with the body. But the music that resonates with the heart, that always has some emptiness. There is both a sense of emptiness and fullness in this kind of music. Keep breathing. As the breath becomes more shallow, the energy increases. As you go deep in this process, the in-breath and out-breath may seem to just completely merge. As you're breathing out, the soul energy, energy of the universe comes in. There's a meeting and bliss. You go beyond breathing for a few moments. जैसे जैसे सांसें और धीमी होती जा रही हैं, वैसे वैसे एनर्जी बनते जा रहे हैं.
ऊर्जा बनते जा रहे हैं। और कभी कभी सांसें बाहर आ रही हैं। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा अंदर जा रही है। इनका जब मिलन होता है तो जैसे शून्यता जिसमें कोई सांस नहीं, केवल एक ऊर्जा का आनंद महसूस होगा। From this place of emptiness, we can reflect on some wisdom. इस शून्यता की जगह से जब ज्ञान को सुनेंगे तो गहराइयों में उतर जाता है। So today in the morning session with Babaji, Mataji, there was a beautiful story shared. And today we can dive deeper into the wisdom from that story. It's a story of our everyday life. It's a story of relationships. It's a story that happens in almost every family. So for those who may not have attended the morning session, this story was about a married couple and it was revealed that in this married couple, the husband who is in his 40s, he and his wife are going through their everyday normal life. And just one scene is played out where, just to summarize it, the husband had some incident in his childhood where, due to that incident, where once his mother slapped him when he was trying to play a prank, that became a big hurt in his chest. And that created an issue for him with the feminine energy, because our mother is a representation of the feminine. So now when he looks at his wife,
He has a playful nature, the husband. He wants to sometimes play a prank and do something fun, but he is afraid. He thinks that you cannot have this fun with women. They will not like it because he's carrying that impression from his childhood. Sometimes what happens in our childhood will create a lasting impression. So in his heart now, in his body, there is an imbalance in the feminine. We have both the masculine and the feminine. He is not completely in tune with the feminine energy because of that incident with his mother. Similarly, with the wife, when she was very young, a little girl, the father left. The mother felt abandoned. She grew up only with her mother in her maternal home. And that distrust began with that abandonment by the father. So just like the husband has a problem within him, because this becomes a part of us, the wife has a part, the wife has a problem with the masculine. Unknowingly, both the husband and wife are projecting their problems on each other. So the problem with the masculine in the wife's heart is projected on the husband. She thinks all men are the same, like her father who abandoned her. So when the husband does not pay attention to her, she thinks all men are the same. And the husband feels that you cannot be playful with women because of what happened with his mother. So he tries to be very serious. When he is serious, the wife interprets that to mean that the masculine energy doesn't like her, reminding of her of the childhood. So there was a story shared where they're both projecting their issues on each other. They both are judging each other without knowing exactly what is happening with the other. It is not at all true that the husband will ever leave the wife or he doesn't like her. He actually wants to be playful with her. So the wife is misinterpreting. And the husband is misinterpreting the wife. Because he had an issue with his mother.
They are both projecting their wounds on each other. तो आज सुबह जो बहुत ही गहरा ध्यान में एक कहानी आई थी, वो पूरी कहानी की चर्चा तो नहीं करेंगे क्योंकि कई लोग यहाँ सुबह ज्वाइन ना हुए हों, मगर एक कहानी का सार आपको बताते हैं कि ये एक कपल की कहानी थी, पति पत्नी की। जो हस्बैंड है, पति है इसमें, उसके साथ एक बचपन में कुछ हो गया था। अपनी मदर के साथ कुछ मजाक कर रहे थे और मदर ने बहुत सीरियसली उनको चांटा मार दिया और उससे उनके दिल में एक घाव बन गया और उनको ये विचारधारा आ गई कि जो नारी की एनर्जी है उनसे मजाक नहीं किया जा सकता। तो अब वो शादीशुदा है, 45 साल की उम्र है, वाइफ है, मगर वाइफ की तरफ मजाक करने कभी जाते हैं तो उन्हें डर लगता है, पीछे हट जाते हैं। जो बचपन में हुआ उसकी याददाश्त से वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं अपनी वाइफ पर। और वाइफ की जिंदगी में जब वो छोटी सी थी तो फादर ने उन्हें छोड़ दिया था, उनको और उनकी माँ को। तो वाइफ जब बच्ची थी तो ये जो यादें हैं कि फादर ने ही छोड़ दिया, तो जब अब उनके हस्बैंड थोड़ा सीरियस रहते हैं या ध्यान नहीं देते तो उन्हें लगता है कि सारे मर्द, सारे मेल एनर्जी ही ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं रखते। और गहराई से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। उनका हस्बैंड तो उनसे मजाक भी करना चाहता है, मगर उनको सीरियस देखकर वो पीछे हट जाता है। एक दूसरे पर ये अपनी एनर्जीज, अपने घावों का, अपने बचपन में जो हुआ उसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं। प्रोजेक्शन करके जजमेंट में आ रहे हैं। तो बड़ा ही गहराई से बाबा जी ने ये कहानी बताई थी, एक एक इंसिडेंट के बारे में। मगर उसका सार ये है कि जो वाइफ है उसके अंदर एक जो मैस्कुलिन है वो वुंडेड है, वो जैसे कि घाव है उसमें, वो मेल एनर्जी को ट्रस्ट नहीं करती अपने बचपन के कारण। और जो हस्बैंड है वो फेमिनिन नारी एनर्जी को के साथ कंफर्टेबल नहीं है कि उनके साथ प्लेफुल नहीं हो सकते। और वो एक दूसरे के एक्शंस को, एक दूसरे जो कर रहे हैं उसको गलत समझने लगते हैं। तो इसका सार ये है कि हम दुनिया को हमारे साथ जो हुआ उसके दृष्टिकोण से देखते हैं, और जो दूसरे के साथ हो रहा है उसको समझ ही नहीं पाते। अपने दृष्टिकोण से देखते हुए उनको जिम्मेदार या उनकी उनमें गलती ढूंढने लगते हैं। हालांकि दूसरे के साथ कुछ और ही हो रहा होता है, हम जानते ही नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। हम उसको अपना पर्सनल इशू बना देते हैं कि वो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं।
जैसे कि इस इन दोनों के बीच में हस्बैंड आते हैं डाइनिंग टेबल पर मजाक करने, और उन्हें पूरी जो एनर्जी, जो ऑरा है वाइफ की, वो ठीक नहीं लगती, तो वो चले जाते हैं नीचे। डिनर का टाइम है, वाइफ देखती है कि हस्बैंड नीचे चले गए। जैसे ही मैंने खाना बनाया, तो उनकी बचपन की याद है कि फादर ने छोड़ दिया था, तो वो सोचती हैं कि मैंने खाना बनाया, हस्बैंड नीचे चले गए। ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल केयर नहीं करते, अबैंडन कर देते हैं। हस्बैंड में अबैंडन करने की कोई भी विचार नहीं था। वो तो मजाक करने आया था, मगर उसे एनर्जी एकदम सीरियस दिखी, तो वो जैसे कि फ्रेश हवा लेने के लिए नीचे चला गया। तो हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या किस लिए कर रहा है। हम अपने दृष्टिकोण से हर चीज पर्सनली ले रहे हैं। और ऐसे और भी उदाहरण बताए इस कहानी में। मेन सार ये है कि हमारे साथ जो बचपन में होता है, हम अगर उसको हील नहीं करेंगे, तो उन घावों से हम दुनिया को देखेंगे, हर चीज को पर्सनल बना देंगे, और ईगो इशू आ जाएगा। तो ये इमोशंस और अहम ईगो के जो इश्यूज होते हैं, ज्यादातर रिलेशनशिप्स में, कपल्स में, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करना, समझ ही नहीं पाना, ये सारी जो एनर्जीज होती है इनकी, ये दूसरे और तीसरे चक्र में और इसके बीच में होती है। दूसरे में इमोशंस, तीसरे में ईगो, बीच में उनका मिक्सचर नेवल में, जो अपने आप में ही जैसे हायर हार्ट है, एक अलग चक्र की तरह है, जिसका जोड़ है इन दोनों चक्रों से भी और अलग भी है। तो इस नेवल की बहुत सफाई हुई। एक दिन पहले भी और आज वो कहानी बता रहे थे कि इतने जजमेंट रहते हैं, इतने इमोशंस रहते हैं जिनका मिक्स हो जाता है, और वो जब तक हम उनको हील, अपने इश्यूज को हील नहीं करेंगे, तो दूसरे को जज करते रहते हैं और पर्सनली ले लेते हैं। सो देयर वाज दिस इंसिडेंट they related in this story, that the husband comes in the living room at the dining table and he wants to be playful, play a prank with his wife, but he can totally sense her energy, which is the aura, and that's he gets reminded of what happened in his childhood when he was being playful. The mother slapped him, so he backs off. He feels that energy. He wants to go for some fresh air. He goes down. Just when she's made the dinner, she sees that he went down when she just prepared the dinner. So she takes it personally because in her childhood, the father abandoned her. So this reminds her that the husband just left when I made the dinner.
She takes it personally. All men are like this, they just leave you. Already the projection has begun. They are judging each other from their childhood imprints in their hearts. Later on, they try to make up. The story goes on. It was a beautiful story. But again, they misunderstand each other. So that leads to those misunderstanding multiplies the knots in their bodies. And the unresolved issues from their childhood are projected in their marriage, leading to more and more knots. And this is the story of many couples. They are projecting their issues on each other. So then we should ask ourselves, why does this happen? What can we do? And this is where definitely divine beings like Babaji, Mataji, they did the healing. They took truckloads of garbage, dirt from our navel area. But what can we do? This is where levels of consciousness can help us. If you think of the story, they both are using their minds only. The emotion, the judgment, the ego. Both of them have an emotion. They are judging it wrongly, incorrectly, the situation. And they have an ego. Husband has the ego, wife has an ego. When you are operating only from the mind, you're only using the tip of the iceberg. Your consciousness is so vast. You're only using your thinking, emoting mind. But remember, you also have a body, you have breath, you have a soul. The body has got so much more than the mind. We're hardly using our body. We're not aware of our soul. We're not aware of our divinity, of our higher self. The mind has just got some impressions. They're not even true. In this story we heard in the morning, they both are projecting things which are not true. They are not in touch with their bodies in this relationship, in this argument. They're not aware of their souls. They're not aware of their higher selves. It's just a meeting of two minds who are in contention, who are in emotion, judgment, and ego. They're hardly meeting each other. तो ये जो कहानी सुबह बताई, जिसमें हस्बैंड वाइफ अपने बचपन की घटनाओं से जो वुंडिंग आ गई, जो घाव बन गए, उससे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, वो एक भावना में, जजमेंट में और एक अहम में है, केवल मन में है। अलग अलग मन है, मन से जजमेंट कर रहे हैं, भावना आ रही है, अहम आ रहा है, एक दूसरे को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसका इशू क्या है,
और पर्सनली ले रहे हैं, ये चल रहा है जो कई शादियों में होता है। मगर आपकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसमें केवल मन ही थोड़ी है। आपका शरीर भी है, सांसें भी हैं, आपकी आत्मा भी है, उनकी आत्मा भी है, आपका डिवाइन सेल्फ, पूर्ण आत्मा भी है, हायर सेल्फ भी है। इन्फिनिटी तो इन सब में है। मन तो छोटा सा एक हिस्सा है। आप एक दूसरे से मन और मन को मिलाना चाह रहे हैं। जो चेतना के हायर लेवल्स हैं, शरीर, सांसों में आना, आत्मा को जानना, पूर्ण आत्मा को जानना, इन सब से भी तो आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। मगर वो पूरा इग्नोर कर रहे हैं। शादियों में प्रॉब्लम ये है कि चेतना बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे है। केवल छोटे छोटे ईगोटिस्टिकल, ईगो में आए हुए, अहम में आए हुए मन है, बस वहीं तक। और जो चेतना बच्चों में होती है, प्रकृति से जुड़ने की, शरीर में, आत्मा में, वो चेतना नहीं है। केवल एक छोटे छोटे मन एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं पाते हैं। शुरू में हो सकता है कुछ अट्रैक्शन हो, शादी होती है, रोमांस होता है, अट्रैक्शन होता है, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है। मगर जैसे ही वो हनीमून फेज खत्म होता है, छोटे छोटे मन आ जाते हैं और ये अपने अपने घावों को लेकर एक दूसरे पर प्रोजेक्शन करना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ऐसे चलता रहता है। तो इसका क्या सलूशन है? And so this is where we have this beautiful wisdom in the next book about a unifying mind and a divisive mind that I spoke on one day, that Parvati Ma is talking about in context of relationships that can be very helpful. So to review the concept, a divisive mind is just living in the emotions, in judgments, in ego, in just the mental concepts. And the unifying mind is living unified with the body, with the breath, with the soul, with the higher self. Divisive mind is blocked. When you're in anger, you are not even aware of your breathing, of your body, you're just shouting. When you're in judgment, you forget your body, you are just judging. When you're in your ego, you have no awareness of your body and soul, you're just in your ego, so you're divided. A unified mind is different. A unified mind is open to breathing, to the body. So when you are working from a unified mind, then even as you're getting angry, you're trying to feel the anger in your breathing. You are being aware of the deeper dimensions. Where is the anger coming from? What is my soul's lesson with this anger? You're aware of your soul's purpose.
And when you get angry, you reflect upon that. Why did I get angry? What did my soul have to learn from this? So a unified mind leads life very differently than a divisive mind. And in that session, I even went over different things like statements. All mind is an illusion. So to say all humans are equal is also not correct. To say some humans are better than other humans is also not correct, because they may be better in one thing and worse in the other thing. All mind mental statements are mental. They are not primordial joy. They are not primordial love or infinite love, which is beyond the mind. So mind itself is just living in the past. Future mind is not, it's only needed for survival. It does not make you grow in consciousness. Growth in consciousness is with your body, breath, soul, higher self. All mind is an illusion, but if you surrender to the unified mind, things like we all are suffering, I should look at you, I should try to understand you just as I want you to understand me. We all are suffering, we all want an end to our suffering. You should love thy neighbor like you expect the neighbor to love you. All of these are unifying statements. But when you make divisive statements, like in that marriage, the husband is, all women are like, you cannot be playful with them, you cannot do pranks with them. He's got a wounded energy about the feminine. So he goes into a divisive mind. He's separating feminine from masculine and blaming all women. That's a divisive mind. When the wife says that all the men just abandon you because the father did that and the husband's not paying attention, she is going into a divisive mind, a judgmental mind. How can they go into a unifying mind? The unifying mind will say, the wife will reflect on her suffering, and then she might think, oh, she might get curious. I just made dinner, why did he go down? If she had made peace with her childhood, if she had forgiven her father, if she had already done the work, the wound was no longer there, then she would not have projected that on the husband. There are many other reasons for the husband to go down. A unifying mind would look for something positive, not negative. Maybe he had a call to make. Just think any thought which is positive, not negative. Why simply think, oh, I just made dinner and he went down and he abandoned me? That's a divisive mind. A unifying mind can also do some projection that may not be true. It might say maybe he had to go down because somebody called him, he had an urgent call to make, he had to maybe attend to some matter. I can find that out, I can ask him later, but let's not judge. So you don't instantly look for the negative,
You're looking for something positive that will unify you. As I said, both unifying, divisive can be an illusion. But that's not the issue. The issue is some illusions are useful. Some illusions are useful. If you always see goodness in other people, making sure that you have boundaries, but you're looking for goodness even when the people are not good. If you see the good in them, there is a possibility that your energy of seeing goodness in them will activate something in them and they will become good. So, what is the truth? If you're looking at them in a good way, makes them good, then that becomes the truth, right? So, this is where unifying mind comes in. And if the wife had opened up to her breathing, when the husband went down, she made the dinner. If she took a few deep breaths, and if she had already resolved the issue with her father and took a few deep breaths, she would become aware of her soul. There's always these soul feelings, love and joy. She could tap into some of that. She could tap into a great curiosity. So when the husband returns, she could be, oh, what happened? How did you go down? And ask that question with like a genuine curiosity, a smile, happiness, because she's feeling that from her soul. When the husband would see her aura like this, oh, she's so happy and smiling, he would instantly change. And that would activate his soul. Suppose he was also in a unifying mind, he was also surrendering to his body and his soul would get activated. And now there would be a unity because the souls are connecting. They are letting the mind go. The soul is complete in itself. It has always got that joy. If both have that joy and they share that joy, then it's like even greater joy happens. It's important to live in the soul because soul has soul feelings. If two people are living in their souls, they're living with soul feelings. They both have joy, they both have love, they both have forgiveness, they both have gratitude. And as they are sharing these, the mind issues become small. Mind is small, it's just the tip of the iceberg. The body is like the lakes, the soul is like the oceans. Why not let the oceans meet? Why do you only want the icebergs to hit each other? This is why we go into breathing and meditate, because we're becoming aware of the more infinite nature. And then when we come back into relationships, it can be divine. I've seen many couples where they are arguing and fighting, and then one of them decides, or both of them decide to get into spirituality, and everything changes. Till they are living only from the head, they are arguing. Once they open up to higher levels of consciousness,
body, soul, higher self, there is so much potential of love, of joy. तो हम जिस कपल की आज सुबह बात हुई थी, वो केवल अपने, बोल सकते हैं, विभाजित मन, जैसे तोड़ने वाला मन, इसका प्रॉपर हिंदी वर्ड हो सकता है विभाजित मन, जो विभाजन करता है, केवल केवल उससे जी रहे थे ये दोनों। अगर ये यूनिफाइंग माइंड में आ जाए, जिसे हम कह सकते हैं संग्रहित मन, जो संग्रह की फीलिंग लाता है, जोड़ता है, तो ये दोनों अपने शरीर, सांसों में आत्मा को, पूर्ण आत्मा को भी महसूस करके एक दूसरे से एक रिश्ता बना सकते हैं। जैसे कि वो ही सिचुएशन, हस्बैंड ने वाइफ का ऑरा देखा, मजाक करना चाहता था, ऑरा से डर गया, नीचे चला गया फ्रेश हवा लेने। वाइफ ने हस्बैंड को देखा, मैंने खाना बनाया, ये तो नीचे चला गया। अभी ये विभाजित मन से देख रहे थे, अपनी अपनी याददाश्तों को लेकर दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि मेरे फादर ने छोड़ दिया, ये भी छोड़ जाते हैं। और उसने उसका ऑरा देखा, हस्बैंड ने वाइफ का, मेरी मदर ने थप्पड़ मारा था, इसका भी ऑरा ऐसा है, लेडीज से तो मजाक ही नहीं कर सकते, वो नीचे चला गया। अपने अपने मन की बात से एक दूसरे को गलत समझा। अब आप सोचिए, इन दोनों ने अगर अपने पास्ट से फ्रीडम पाली होती, वाइफ ने अपने फादर को फॉरगिव, क्षमा कर दिया होता, ऑलरेडी वो एनर्जी प्रोसेस हो चुकी होती, और हस्बैंड ने भी अपने मदर से जो घाव जो बना था वो कर लिया होता प्रोसेस, तो वो एक दूसरे को ऐसे नहीं समझते। शायद वाइफ बाहर आती, देखती हस्बैंड नीचे चला गया, तो एक जिज्ञासा आती, अरे क्या हुआ, वो नीचे क्यों चले गए। सांसों में रहती, आत्मा की कुछ खुशी भी होती, प्रेम जो अंदर से आता है, प्रेम, उसकी भी फीलिंग हो सकती है। तो वो एक खुशी से सोचती कि क्या हुआ, क्यों चले गए नीचे। और जब वापस आते तो उसी जिज्ञासा से पूछती, क्या हुआ, आप नीचे क्यों चले गए। मगर उसके चेहरे पर जो ऑरा होता, वो, अगर सांसों के द्वारा आप खुशी में है तो एक खुशी का ऑरा होता। उस भावना से जब वो पूछेगी हस्बैंड से, तो वो ऑरा दिखेगा हस्बैंड को, और वो भी, उससे उसकी आत्मा भी एक्टिवेट होगी। और अगर उसने भी अपने इश्यूज को प्रोसेस कर लिया था, उससे शांति हो गई थी, जो भी हुआ बचपन में, तो वो घावों से बात नहीं करेगा, ये नहीं सोचेगा कि सारी लेडीज ही ऐसी होती हैं जिनसे मजाक नहीं कर सकते। वो फीलिंग ही नहीं होती। अपन क्या है कि छोटे छोटे मन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें केवल इमोशंस हैं, जजमेंट्स है, अहम है। शादियों में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सांसों में नहीं आ रहे, शरीर में नहीं जा रहे, आत्मा का कुछ पता नहीं, खुशी अंदर से नहीं आ रही, दूसरे से खुशी मांग रहे हैं। वो हमें खुश करे तो हम खुश रहेंगे, वो हमें प्यार दे तो हमें अच्छा लगेगा। पर एक खुशी और प्यार तो आपके अंदर है, आपकी आत्मा में अनंत रूप से भरे हैं ये, उनको आप बाहर लाइए। और वो आप तब ला पाएंगे जब मन शांत होगा, सांसों में आएंगे। इसीलिए हम सांसों में रहने से, अनंतता से जुड़ने से, अगर ये दोनों वहां होते तो वाइफ को जिज्ञासा होती, वो पूछती,
और हस्बैंड भी कुछ प्यार और खुशी से ही जवाब देते, उनकी आंखों में देख के कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे चीजों को कि वो नीचे क्यों चला गया, उसको इतना बड़ा इशू। शादियों में कितनी बार छोटी छोटी चीजों में अहम जाग जाता है, जजमेंट्स आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मन एक दूसरे से मिलन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी चेतना को जगाना है, आत्मा की फीलिंग्स, आत्म भावनाओं में जाना है। तो ये इश्यूज अपने आप रिजॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि मन तो एक आइसबर्ग है, शरीर जैसे कि तालाब है, आत्मा समुंदर है। समुंदर तो एक दूसरे से मिल सकते हैं ना, एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं ना, आइसबर्ग नहीं हो सकते, वो अलग ही रहेंगे। तो आप उस दृष्टि से देखेंगे तो शादियों में खुशी आ जाएगी, कपल्स में खुशी आ जाएगी। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में, आत्मा में आना जरूरी है सांसों से, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप बहुत स्वीट हो सकती है। यही कपल, ये जो सारा सुबह जो बताया था बाबा जी ने, सुनीता जी ने जो पूरी एक बहुत ही प्यारी कहानी बताई थी, उस कहानी का कुछ और ही अंत होता अगर ये इनकी चेतना ज्यादा होती। वो होती संग्रहित मन की, जो मन जो सांसों से जुड़ा है, जो शरीर से जुड़ा है, वो मन जो आत्मा से जुड़ा है, वो मन जो पूर्ण आत्मा से जुड़ा है, उस मन में होते तो अहम डिसॉल्व हो जाता, जजमेंट नहीं होते, एक दूसरे के प्रति एक जिज्ञासा, एक खुशी, एक प्यार का भाव होता। तो इस संग्रहित मन, और मन तो सारा ही इल्यूशन है, ये हम जानते हैं। जिस दिन एनलाइटनमेंट होगा, विचार चलेंगे ही नहीं, जब चलना है तभी चलेंगे, एकदम लाइट बन जाएंगे, वो हम समझते हैं। मगर वहां तक पहुंचने के लिए संग्रहित मन, जोड़ने वाला मन, जिसमें ऐसे विचार होते हैं कि सब मानव समान है, सब में सफरिंग है, सब सफरिंग की एंड चाहते हैं, सबके साथ बचपन में कुछ ना कुछ हुआ है। एक दूसरे को समझना, जैसे आप दूसरा से सम, दूसरा आप चाहते हो आपको समझे, आप भी उसी तरह से उसे समझे। सिंपथी लाना, एम्पथी लाना, उस तरह से मन को रखेंगे, संग्रहित मन जो जोड़ता है। और हो सकता है उसमें आपका ख्याल गलत हो, आप बाहर आए वो नीचे चला गया, आपने एक मन में विचार सोचा, शायद कोई फ्रेंड आ गया होगा, या शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया होगा। हो सकता है दोनों बातें गलत हैं, ना तो कोई फ्रेंड आया है, ना कोई इम्पोर्टेंट कॉल आया है। मगर ये क्यों सोचना कि सारे मर्द, सारे मेल एनर्जी मुझे छोड़ जाते हैं, तो वो भी डिनर के टाइम मुझे छोड़ गया। ये भी तो एक इल्यूशन है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो ऐसा हस्बैंड है ही नहीं कि जो वाइफ को छोड़ जाएगा, मगर आप वो विचार डाल रहे हो। तो अगर आपको कोई नए विचार बनाने ही हैं, तो संग्रहित मन से बनाइए। कुछ भी सोच लीजिए, शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, शायद कोई फ्रेंड आया है, कुछ ऐसा हुआ है, फिर पूछ लीजिए उनसे कि क्या हुआ। कई रिलेशनशिप्स में आजकल डिवाइसिव माइंड, विभाजित मन से
एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर जजमेंट्स जो वहां बिलोंग नहीं करते, जो वहां पर है ही नहीं ऐसा कुछ, मगर वो जजमेंट्स कर देना, दूसरे को थोड़ा डाउन कर देना, आर्ग्यूमेंट्स में आते रहना, अहम में आते रहना, क्योंकि हम सांसों से अहम को पिघला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम आत्म भावनाओं में नहीं जा पा रहे हैं, केवल मन चल रहे हैं, और एक कैसे नरक जैसी जिंदगी हो जाती है कईयों की। शादी है, साथ में है, अलग भी नहीं हो सकते, समाज क्या कहेगा, और रोज लड़ना है, और रोज वैसे ही जीना है। तो इसमें संग्रहित मन की जो ज्ञान है कि मन को रखो, मगर मन में सोचो आप ऐसी भी चीजें सोचो जो हो सकता है सही नहीं है, मगर जो एकता लाने वाली चीजें हैं, ऐसे सोचो। हमेशा अच्छा ही देखो, देख सकते हो तो। जरूर है कि बाउंड्रीज रखो। अब बेवकूफ नहीं बनना, ये नहीं बोल रहे कि आप दूसरा आपको बेवकूफ बना जाए, मगर जहां पर कुछ बेवकूफ बनने की बात ही नहीं है, वहां अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से फ्रीक्वेंसी अच्छी जाएगी, दूसरे का मन भी बदल जाएगा। हाई वाइब्रेशंस लाओ, हाई विचार सोचो, आत्मा में जाओ। फिर एक इश्यू हमने अभी तक नहीं कवर किया, वो है बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि कपल्स में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो अपन अपने शरीर को भूल ही जाते हैं। आप टेबल पे पास पे आ सकते हैं, वाइफ को गुस्सा आ रहा है, अपना हाथ उनके हाथ पर रख दीजिए, उनकी आंखों में देखिए, केवल प्रेजेंस दीजिए उन्हें। उन्हें ये आभास होगा कि आप उनके लिए बस खड़े हैं, देख रहे हैं। अपने बॉडी लैंग्वेज यूज करिए, हाथ पकड़ा कर केवल, बिल्कुल कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोला, वो गुस्सा पिघल जाएगा। हम शरीर का यूज ही नहीं कर रहे। शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई आपको पता है ये गुस्सा कोई कारण से आ रहा है, उनको शांति चाहिए। आप भी गुस्सा करेंगे तो और बढ़ जाएगा। बॉडी लैंग्वेज यूज करेंगे, अगर हग कर सकते हैं वो करेंगे, या हाथ पकड़ेंगे, तो शायद वहीं वो सारा गुस्सा पिघल जाएगा। हम सांसों को, शरीर को, आत्मा को, पूर्ण आत्मा को, जो 99% चेतना वहां पे है, उसको हम इग्नोर किए जा रहे हैं। केवल एक जो मन है जिसमें इमोशंस, ईगो, जजमेंट्स, बिलीफ्स, धारणाएं, ये सब है, इसको खाली यूज कर रहे हैं। So one thing we forgot to mention is also the body. Many times there are arguments and you want to state the truth. So let's say the wife is angry and the husband understands why she's getting angry. But instead of saying, why are you getting angry? It's such a small thing. Why can't you just be quiet? Instead of saying something like that, which will create more contention, he can simply use his body language. He can come close to her. If she's sitting at the dining table, he can hold her hand, just look in her eyes, and just have that presence that I'm here, I understand, I'm here for you. Don't say a word, just do that. And that will resolve the issue. She'll melt away. If you can give her a hug, you can do that sometimes, if the situation allows that. There's so much we can do
which is not of the head, because the bodies understand each other. And these are the levels of consciousness, from the mind to the breath, to the body, to the soul, to the higher self. 99% of the consciousness is in these higher levels. Mind just thinks and thinks and emotes. It is not feeling that ecstasy of the nature of the mountains, the joy that comes with meditation or with your soul. The mind is not feeling that. So there are two kinds of mind: divisive mind that stays in all this, and unifying mind that connects with breath, body, soul, and so on. So become the unifying mind, use the body language, go deep into the soul, reflect on you had a childhood that you made peace with it. Maybe your wife also had a childhood in which she suffered. Reflect on that, maybe. Maybe it's coming from some past life. She has to resolve this suffering. If you can see that deep behind the issues, there might be some deep suffering, you will forgive her. So invoke your soul, a lot of forgiveness, a lot of love. And if you go into body, soul, and higher self is always divine. We know that because we're all playing roles. So this is what I wanted to share today about the story in the morning. It was a beautiful story about everyday life, that they were using their divisive minds. They were not aware of their breath and their bodies. That couple, they were not surrendering to their souls and soul feelings, and they were not aware of their divinity, their higher self. If the same couple came together with these levels of consciousness, it would be a more happy life. They would not be. And in the story, they get so offended by each other that their wounds, they start multiplying. The wound in the chest, the knot, increases and goes into armpits and thighs and other places. And the wife has some issues with ankles, and that energy spreads in her body. Look, a simple situations that they're going through, they're seeing it from the lens of their ego. They're living in the iceberg. So the importance of being in higher levels of consciousness, which you can achieve through breathing, through spirituality, that cannot be overstated. So come back to today we went on really long. I think now the time is to come back to the body and your breathing. अपनी बॉडी में वापस आ जाइए, सांसों को महसूस करिए। थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया आज, अब इसे हम यहाँ खत्म करते हैं। अपने शरीर को, सांसों को धन्यवाद दीजिए।
ये मेडिटेशन से आपका संग्रहित मन जो है वो एक्टिवेट होगा। ये धारणा बनानी है कि मन को हमेशा शरीर, सांसों, आत्मा, पूर्ण आत्मा से जोड़ के रखना है। जो संग्रहित मन है, डिवीजन में नहीं जीना कि अभी मेडिटेशन कर लिया और अब अपने विभाजित मन में आ गए, जहाँ शरीर, सांस, आत्मा का कुछ ख्याल ही नहीं है दिन भर। ऐसे नहीं जीना है। तो शरीर और सांसों को धन्यवाद दीजिए। थैंक योर बॉडी एंड योर ब्रीदिंग। हाथों को अपने चेहरे पर ले जाइए और धीरे धीरे शरीर को पूरा टच कीजिए, ऊपर से नीचे तक, और वापस लेग से लोअर बैक, कंधों पर होते हुए वापस अपने चेहरे पर। Thank your body and your breath. Touch your whole body going all the way to the feet. Bring your hands from your legs to the lower back, to shoulders, and back to your face. And thank your unifying mind, the mind that connects you to your body, breath, soul, higher self. And thank all of these. Thank this mind. And you can open your eyes. आंखें खोल सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें खोल सकते हैं। Open your eyes. So good night everyone. शुभ रात्रि, सोइए। फिर कल सुबह मिलेंगे। We will meet in the morning. Okay, I'll close the meeting now.